In this prevailing condition, we are marking out one situation which used to make us aware that essentials should be delivered to every doorstep because that marks the connecting point of producer to user, mark the supplier to consumer, marks everything with one pause. Pandemic COVID-19 outbreak, lockdowns, and still everything is running smooth because the economy problem, central problem of economy, problem of choice, scarcity management, crisis management, everything dealt properly in every economy with the help of economics. So hereby we have been introduced with three questions of the hour: what to produce, how to produce, and for whom to produce. So we focus on GDP growth along with the proper utilization of resources, which is meant to set as optimal utilization of resources. अवेलेबल मीन्स जो हमारे पास मौजूद है उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन की प्रोसेस, करंट सिनेरियो को नज़र में रखते हुए फ्यूचर की डिमांड के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो. So we have to utilize our available means in such a way. In this phase, we will learn for whom to produce, the third problem of economy. Being in a scenario, we have to discuss three aspects: what to produce, in what quantity we have to produce, and how we will produce it. Then when we have produced it, we have utilized the technique, then we have an output, then this output need to be produced as per the requirement. So we have consolidated all that. तो अब उसे हमें प्रोड्यूसर के एंड से यूज़र के एंड तक ले जाना है. When we deciding the factor for quantity production and the product decision, then we have to focus on consumer. So we have considered one point for whom to produce already in first problem, but now we will going to have detail of it. Available means are limited and they marks the quantity and they have the capacity to deliver to their best potential, but alternative use and our unlimited wants adds the problem. जो अवेलेबल मीन्स है वो कम है, जो अवेलेबल मीन्स है उनकी कमी की वजह से हम हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. सो वी नीड to focus on one section of society so we can render the best services to them and our resource can be optimally utilized. So there is two sections of society which we have in economy. One is richer class and another is poor. Categorization that marks you looking forward. Poverty, poor person, middle class, they have the demand of social justice and they have to focus on the goods which can deliver you social justice. So that can reduce inequality and promote equality. जब चीज़ों का बेस्ट यूज़ हो, हम प्रोड्यूसर के एंड से भी चीज़ें मैनेज करें और पुअर पीपल की चॉइस के हिसाब से भी, तो हमें सोशल इक्वालिटी और जीडीपी का एक ऐसा संतुलन चाहिए दैट कैन मार्क्स द प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एंड कैन सेटिस्फाई द सोसाइटी ऑल्सो. सो लेट्स चेक इन फिजिकल क्लास. Dear scholars, warmly welcome you in new phase of learning economics class where we are discussing central problems of economy. And the central problem of economy will be dealt here. And third one we are discussing. For whom we would produce. For whom we would produce. And then we will going to can have the word replacement from we would to for whom to produce. हम किसके लिए बनाएंगे? So the focus is on 2 point. कि we will going to have the consumer from poor section of society. सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे. पुअर सेक्शन, रिचर क्लास, रिच सेक्शन. पुअर सेक्शन को अगर आप फोकस करेंगे तो देन यू विल गोइंग टू हैव सोशल जस्टिस.
और अगर रिच सेक्शन को फोकस करेंगे देन यू हैव प्रॉफिट अप्रोच. देन अगर आप सोशल जस्टिस को देख रहे हैं तो इनइक्वालिटी विल रिड्यूस, कि देश से गरीबी कम होगी. इनइक्वालिटी या आपकी जो ये इक्वालिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है सोसाइटी में, अनबैलेंस्ड है इनकम में, वो रिड्यूस होगी. और अगर आप प्रॉफिट को देख रहे हैं तो आपका क्या होगा, जीडीपी की ग्रोथ होगी. जीडीपी ग्रोथ होगी. So basically it is an approach which has the selection whether you will going to have consumer from the poor section or from the rich section. If you have poor section consumer then you will produce your necessary items जिसे आप आजकल essentials के नाम से जानते हैं. इसे कहते हैं essentials, जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है. essential. And if you are following the richer section, then you will going to have GDP growth, and then you will have here luxury items. तो हमारा यहाँ मेन फोकस है सोसाइटी. एंड सोसाइटी क्यों है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर सोसाइटी से आता है. नाउ गेट टू नो अबाउट इट, कि फॉर होम टू प्रोड्यूस विल डील विद द कंज्यूमर. कंज्यूमर कम्स फ्रॉम सोसाइटी. देन पुअर सेक्शन की सोसाइटी को आप देखना चाहते हैं, रिचर सेक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं. अगर सोशल जस्टिस करनी है तो पुअर सेक्शन के साथ जाएंगे. इनइक्वालिटी यहाँ पर रिड्यूस होगी. एंड नेसेसरी आइटम्स, एसेंशियल्स की सप्लाई होगी. देन रिचर सेक्शन है तो प्रॉफिट की अप्रोच होगी, जीडीपी की ग्रोथ होगी और लग्जूरियस आइटम आपका सिलेक्शन होगा. हेयर यू फोकस ऑन कंज्यूमर. In how to produce you focus on technique, and in what to produce you focus on production item and then its quantity. So this is third phase of the central problem. Have a Zoom board look, and we are closing down it for today, and have a PowerPoint presentation as well. So for whom to produce, this is the centric question where we decide who will be our product utilizer. We were going to focus on society or we were going to focus on GDP. So we have to maintain a balance, and then balance have to be maintained. We need a one crisis management process which we deal in economics. हम चीज़ों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. दैट बैलेंस कैन बी अटेन विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो हियर बाय with the concluding note we have to focus on the consumer because they will utilize the product for satisfaction. So with this note we are concluding with a promise to see you again soon.